हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू ट्यूटोरियल। आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड international relations. So let us start and understand the basic difference between the international politics and international relations. So when we talk about international politics is concerned with politics of international community in a narrow sense. It basically focuses on diplomacy and relations among states and other political units, whereas international relations consist of totality of the relations among people and groups in the world society. Therefore, IR describes all kinds of relationship between country and people. Now here we need to understand very simple point that when it comes to international politics, it is totally concerned only with politics of international community. Now when we say the politics of international community, it is very in narrow sense. And why it is narrow sense? Because it deals and consider only diplomatic, political or official relations among the states. It does not give any space or any importance to other kinds of relationships. So therefore, international politics in a real sense, it is narrow perspective. Whereas when we talk about international relations, it talks about totality of the relations, totality of the relations among the people and groups within the world society. Therefore, IR describes that in international relations, all kinds of relationships between the country and the people are given importance, not only just diplomatic, official or a political relationship, but it talks about broader perspective about all kinds of relationship, whether it's cultural, whether it's economic, or whether it's technological. Every interference, every interaction between people and a country is being spoken about in IR. So therefore, IR can be considered as a broad perspective. जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो सब्जेक्ट है ये बहुत नैरो सेंस में देखा गया है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बेसिकली टॉक्स अबाउट ओनली पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, और इसका कारण यही है कि इसका जो फोकस रहा है वो सिर्फ डिप्लोमेसी के ऊपर रहा है, या फिर पॉलिटिक्स के ऊपर रहा है, या फिर जो ऑफिशियल रिलेशंस होता है अमंग द स्टेट्स उसके ऊपर फोकस रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कभी बाकी विषयों के ऊपर या बाकी सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया है, और इसकी वजह से उसका फोकस सिर्फ डिप्लोमेसी या फिर ऑफिशियल रिलेशनशिप के ऊपर होने के कारण ये बहुत नैरो पर्सपेक्टिव से भी देखा गया है। और जहाँ तक इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है, ये बहुत ब्रॉड है। ये ब्रॉड इसलिए है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये टोटलिटी ऑफ द रिलेशनशिप को देखता है, और इस टोटलिटी ऑफ रिलेशनशिप में लोग और जो ग्रुप्स हैं वर्ल्ड सोसाइटीज़ में उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। और इसीलिए IR जो है ये सभी तरह के रिलेशनशिप के ऊपर अपना स्ट्रेस डालता है, और सिर्फ एक पॉलिटिकल या फिर ऑफिशियल रिलेशनशिप के ऊपर नहीं, बल्कि सारे जो बाकी के अनगिनत रिलेशनशिप है स्टेट्स के बीच में या फिर इंडिविजुअल और कंट्री के बीच में, जैसे आप ट्रेड ले लो, कल्चरल रिलेशनशिप ले लो, या फिर टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप ले लो, जो इंटरेक्शन आज हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशन में, इसके ऊपर पूरा उसका स्ट्रेस है। सो इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस एक बहुत ब्रॉड एरिया है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत नैरो पर्सपेक्टिव है। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
International politics emphasis on official relations between the state and their government and officials. Very simple. Whereas international relations include non-officials, informal, and private relations among groups and people. Again, very precise point to understand that in international politics, the emphasis are given only on official relationship between the state and their government and their officials, and again no importance is given to any other kinds of relationship. Whereas in international relations it include obviously the relationship between the state, their government and official, and beside this it also talks about that non-officials relationships are also important. Informal and private relations are again also very important among the groups and the people. यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमें समझनी है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसका जो फोकस रहा है, उसका जो एम्फोसिस रहा है, वो सिर्फ ऑफिशियल रिलेशंस के ऊपर ही रहा है। और ये ऑफिशियल रिलेशंस अमूमन होता है स्टेट्स वर्सेस स्टेट, या फिर उनकी सरकार और इनकी सरकार, या फिर ऑफिशियल्स के बीच में। वेरेस जो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो फोकस रहा है वो ऑब्वियसली it does talk about the relationship between the state and the government and the official, but इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन ने एक बहुत हद तक एक स्पेस क्रिएट किया है नॉन ऑफिशियल रिलेशंस के ऊपर। इनफॉर्मल और प्राइवेट रिलेशनशिप जो है ग्रुप्स और लोगों के बीच में, ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। और इसीलिए हमें ये समझना है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है अगेन वो नैरो सेंस में देखा गया है, और इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखा गया है। मूविंग ऑन अगेन comes to the next very important point, that international politics is narrow concept whereas international relations is wider and a broader concept. Very true, as we have spoken about that international relations speaks only about politics, official relationship between the government and the official. It basically says that it has made itself more narrow perspective to just talk about political relationship among the states or between the state, whereas international relation is really in the real sense a wider perspective. It's a broader perspective because it just not cover only politics, as I said, but it covers all the issues. It covers all the players from nation state to non-state actors, and within non-state actors we have different organizations, different institutions, different methodology. In fact, it also speaks about, in a larger context, about people to people contact and other very important relations which are very important for any country for that matter. यहाँ पर और एक बार मैं बोलना चाहूँगा कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, और नैरो कॉन्सेप्ट इसीलिए है क्योंकि उसका जो फोकस रहा है, उसका जो स्ट्रेस रहा है वो सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर ही है। पॉलिटिक्स बिटवीन द स्टेट, पॉलिटिक्स बिटवीन द गवर्नमेंट या फिर ऑफिशियल। वेरेज जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं ये बहुत बड़ा और ब्रॉड कॉन्सेप्ट बन चुका है, क्योंकि ये सिर्फ सरकार या फिर गवर्नमेंट या फिर उसके ऑफिशियल यही नहीं कवर करता है, बल्कि सारी जो चीज़ें यहाँ पर हो रही है उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। नॉट ओनली जस्ट स्टेट एक्टर्स को इम्पोर्टेंस मिला है, बल्कि यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स को भी बहुत इम्पोर्टेंट मिला है, जैसे कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर इंस्टीट्यूशंस है या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, सबको यहाँ पर स्पेस दिया गया है, क्योंकि ये सारे जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स है इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज की तारीख में। इसलिए इंटरनेशनल रिलेशंस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट और वाइडर कॉन्सेप्ट बन चुका है। एंड देन वी हैव another very important difference, that international politics was mainly studied with historical, descriptive and analytical methods, whereas international relations is being enriched by the wider and more versatile and scientific approach and methods. The main concern of international politics is about historical events.
it's about past, it's about descriptive nature, or you can say analytical nature. So basically in international politics, the focus, the stress is given to all the historical events which has happened and how obviously it has shaped the entire future in current international politics. Whereas in international relations, the importance is given to a wider and more versatile, or you can say they have adopted scientific approach and methods to understand the impact of obviously historical events, as well as how it is going to have impact in the future, how today's behavior of the state will have an impact not only on that particular country or in the region, but how it is going to affect the entire global order. So therefore international relations today talks about understanding the issues in international politics or in international relations more in a wider sense, more in a versatile sense, as well as adopting certain methods. And as I said, the methods have always been looking issues from scientific studies और साइंटिफिक अप्रोच. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो इम्पोर्टेंस दिया है वो हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है, उनको डिस्क्रिप्टिव नेचर में डाला गया है ताकि उसकी एनालिसिस हो सके. और इस अप्रोच में जो इम्पोर्टेंस दिया है वो सारा हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर या हिस्टोरिकल पास्ट जो इवेंट्स हुए हैं उसको ज़्यादा तवज्जो दिया गया है. और इसकी वजह से वो कभी भी फ्यूचर के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, और उनकी जो पूरी स्ट्रेंथ रही है वो हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव मेथड्स के ऊपर ही रही है. यस, दे डू एनालिटिकल स्टडीज़ अंडर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लेकिन जो एनालिटिकल मेथड्स अडॉप्ट करते हैं उनका अगेन जो स्ट्रेस है वो हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा है, जो पास्ट इवेंट हुए हैं उसके ऊपर ज़्यादा है, ना कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव के ऊपर. वेरस जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस एक वाइडर कॉन्सेप्ट बन चुका है, और वाइडर कॉन्सेप्ट बनने के कारण उसकी जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट हो गया है. यहाँ पर वो साइंटिफिक अप्रोच की बात करता है या फिर अडॉप्टिंग साइंटिफिक मेथड. जैसे कि अगर देखा जाए कि आज के तारीख में जो कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड हो रहा है, वेदर इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड चाइना और इन यूएस, उसका फ्यूचर में इम्पैक्ट कितना रहेगा, हाउ इट हैज़ चेंज द ग्लोबल ऑर्डर, और वेदर ये ग्लोबल ऑर्डर जो अभी चेंज होने के कगार पर है इसके बारे में क्या बात करता है, उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में कितना रहेगा, उसका इम्पैक्ट उस रीजन में कितना रहेगा. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो साइंटिफिक अप्रोच से उसको देखा गया है और बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव से उसको देखा गया है. सो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. And the last very important thing which I would like to quote to Dr. Adi H. Doctor, who was a very famous political scientist. So he said when it comes to international politics that those interested in oppositional relations label their studies as international politics, and those who also include cooperative relations name their studies as international relations. So it's very simple difference which Dr. Adi have proposed, that anybody who talks about opposing each other, these people can talk their studies international politics. And as I said, international politics is very narrow concept. It basically narrow because it deals only with politics, and when it deals with the political relationship with one nation or among the nation, then obviously you do not accept the wider studies which have been carried out. So you have the tendency of opposing anything which doesn't fall within the area of politics or political relationship. And therefore Dr. Adi have rightly said that anybody who oppose the relations, such people would be called international politics. Whereas in international relations, anybody who include cooperative relations, anybody who talks about building a relationship based on understanding and cooperation, such studies would be named as international relations. Because it has been called a very wide
concept or a wide subject. It involves a lot of cooperative measures among the nations. Yes, in international relations, we do talk about building a better relationship among the nations, and therefore it stresses more upon cooperative understanding or cooperative studies. And therefore, as rightly said by Dr. Adi, that anybody who stress more upon building a cooperative relationship among the nations, then such relationship would be called as international relations. These are some of the most important differences when it comes to international politics and international relations. So I hope you have understood this topic, and I will see you soon in next tutorial. Till then, take care.